Hello everyone, welcome back to yet another episode of Healthier Path. So today we are finally doing the last session of vitamin D. I understand that अगर आपने तीनों सेशन पहले वाले देख लिए हैं, आज वाला सेशन आपके लिए एक रिवीजन या फिर एक summary होगा. And if you have not watched any of the sessions, then today would be a good session to watch because it would be encapsulating every single thing that we have discussed so far, and would be done mostly in a question and answer format. So, without much delay, I would like to start the session. And before I do that, I would Induji is also not present. I request all Induji. Yeah. शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननं हंसम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे. Thank you. Thank you, Amriji, for this lovely prayer this morning. Let's start off with the session proper now. So we'll start off with the questions. Questions आपके हैं, सवाल आपके हैं, and हम जवाब देने की कोशिश करेंगे. I hope that it is understood by most of you now. So, what is the ideal course of vitamin D for a normal Indian? And after completing the course, when should we repeat it again? Details about the ideal gap between two courses, as many of us are aware of vitamin D deficiency, and because of that, on and off start taking it and thinking we are doing right thing to our body. So, सवाल simple है कि हम विटामिन डी का जो कोर्स है उसको हम कितनी बार हमें लेना चाहिए. एंड द आंसर इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल. इफ यू आर डेफिशिएंट then you would need to take the vitamin D medicines, and if you are not deficient then you're not supposed to take the medicines. So deficiency बहुत simple सा test है, blood test है, and you need to get that done, and only if you're deficient should you take the dosing. Anyway, so what I would like to tell you is that हम यहाँ पे इंडिया में the dosing that we follow, so there can be a daily dosing and there can be a weekly dosing. So अगर आपकी जो vitamin D के levels हैं वो बहुत कम रहते हैं, then what you are going to do is you are going to you're going to take the loading dose first. Loading dose में आपको हफ्ते में एक बार कोई भी दिन आप चूज करके अपने लार्जेस्ट मील के साथ में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी लेने होते हैं. 8 हफ्ते तक, मतलब 2 महीने तक, every week you have to take it. So 8 tablets you have to take in total, 1 tablet per week for 8 weeks, and then you are going to take the same tablet per month, and that can be taken for a longer period of time. एक महीने में एक बार आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एज अ मेंटेनेंस डोज लेना है, एंड लोडिंग डोज जो है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स per week for 8 weeks. This is how you're supposed to take it. So while you're taking the maintenance dose, maybe after 8 months, you can get your vitamin D levels checked, and if you see that your vitamin D levels are still low, then you can take the loading dose again. And this has to be guided. It has to be done under the guidance of your physician. अपने आप कुछ ना लें. Let your physician and your doctor decide कि आपको कौन सी दवा कब लेनी है. So I hope this is very very clear. How long excess vitamin D is stored in the human body? So I hope that most of you can understand the concept of half-life. So you should know that कोई भी मिनरल हो या कोई भी हमारे शरीर में हम कोई भी पदार्थ हो, वो एकदम से खत्म नहीं होता. उसकी एक हाफ लाइफ होती है. मतलब आप समझो कि अगर आपने 100 यूनिट्स कोई चीज कंज्यूम करे हैं, तो 100 यूनिट्स को 50 यूनिट्स होने में कितना समय लगता है, दैट इज द हाफ लाइफ. Okay, so suppose there is a particular
ड्रग दैट यू आर टेकिंग, आपने 100 यूनिट्स ऑफ द ड्रग लिए और 15 दिन के बाद में वो आपके शरीर में उसका सिर्फ 50 यूनिट ही बचा, तो उसकी हाफ लाइफ हो गई 50। और उसके बाद में जो ग्राफ है वो इतना सिंपली, आई विश आई कैन शो यू, सो जस्ट लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। So what I mean to say is that the answer to this question is not very simple. Half life के बाद में जो इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा वो धीरे धीरे कम होता है। I'll just show this to you. So this is just Google. It is not the half life of vitamin D. It is the half life of a. Let me just. So let's take this graph for example, and now you see that अगर हमने इसका 1 यूनिट लिया है तो 1 यूनिट को 5 यूनिट्स 0.5 यूनिट्स में आने में इट विल टेक दिस 1 हाफ लाइफ। एंड उसके बाद में जो जो ड्रॉप है वो इतना, अगर ये ऐसा ही ड्रॉप होता तो ये ऐसे होके यहीं पे गिर जाता, बट ये फिर धीरे धीरे आपके बॉडी से सिस्टम से निकलता है एंड इट टेक्स टाइम टू लीव। सो हाफ लाइफ जो विटामिन डी की है, हाफ लाइफ ऑफ विटामिन डी इज 15 डेज। सो 15 दिन के बाद में उसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है एंड उसके बाद में it can it takes a longer period of time to just completely be eliminated from the body. So this is why we are choosing to give you that once a week dosing, तो आपकी जो विटामिन डी के लेवल्स है वो मेंटेन रहें, एक अच्छा बूस्ट मिल जाए आपके विटामिन डी के लेवल्स को, एंड देन यू कैन टेक द मेंटेनेंस डोज व्हिच इज once a month, which is once in every 30 days. So vitamin D deficiency and AVN relations. So AVN क्या होता है ये मैं समझा दूं आपको। AVN is जब आपके बोन्स हैं, जो बोन्स में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचने के कारण देर इज नेक्रोसिस, देर इज एवास्कुलर नेक्रोसिस, देर इज आप समझो कि जो बोन है उसका बोन का एक पार्ट जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इट बिकम्स ऑलमोस्ट डेड। सो वो सड़ने लग जाता है, वो डेड होके वो सड़ने लग जाता है, दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। एंड विटामिन D3 डिफिशिएंसी के साथ में इसका कनेक्शन जो है, सो इसको विटामिन D3 की डिफिशिएंसी से डायरेक्टली एवीएन नहीं होता, लेकिन अगर आप विटामिन D3 लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, देन यू माइट बी एबल टू प्रिवेंट इट। सो इसका उपाय हो सकता है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। AVN जो है, avascular necrosis of the bone, there are many reasons due to which this can happen, and मल्टीफैक्टोरियल इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, एंड विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज जस्ट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मे बी, एंड दस इफ यू गिव विटामिन D3 देन आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन D3 इफेक्ट ऑन द बोन। सो बहुत सारे यहाँ शब्द है which I don't think you need to understand. But see, if you remember the slide, I had talked about this. So vitamin D3 क्या है? ये कैल्शियम का फ्रेंड है, और कैल्शियम जब भी विटामिन D3 हमारे बॉडी में होता है, ये जाके हर एक ऑर्गन को बोलता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, प्लीज आपने जो कैल्शियम को रिलीज करने की, शरीर से निकालने की जो प्लान बनाई है, उस प्लान को कैंसिल करके आप कैल्शियम को वापस हमारे शरीर में डाल दीजिए, वापस ब्लड में आप डाल दीजिए। सो दिस इज द विटामिन D3 एंड दिस इज व्हाट इट डज टू कैल्शियम। सो बोन जो है, ये बोन एक कैल्शियम का स्टोर हाउस है। So calcium and bone में there are constantly some processes going on जहाँ पे bone resorption होती है, meaning कि bone में कुछ osteoclasts होती हैं, osteoclasts बोल के कुछ cells होते हैं जो बोन से कैल्शियम निकालते हैं। ओल्ड बोन जो है, ये देयर इज ऑलवेज अ रिन्यूअल प्रोसेस गोइंग ऑन, एंड ओल्ड बोन से कैल्शियम निकाल के हमारे ब्लड में डालते हैं, एंड देन न्यू बोन फॉर्मेशन कीप्स हैपनिंग। दिस कीप्स हैपनिंग
तो ये this balance is also mediated by vitamin D, and this is what vitamin D3 does. So अगर हम vitamin D3 बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो भी हमारे बोन में the osteoclast will be promoted, and that can also cause problems with the bone. And for the normal functioning of the bone also vitamin D is required, but एक सही मात्रा में. So always before starting the loading dose, you need to consult a doctor, and you need to check your vitamin D3 levels. Before that, do not start it. So now there was this question yesterday कि किस तरीके से सनलाइट हमारे शरीर से विटामिन डी को एक्सट्रैक्ट करती है. तो आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है. So there is a pigment called 7D hydrocholesterol that is there in the skin as well. So जब sunlight पड़ती है, then this 7D hydrocholesterol, because of the presence of sunlight acts as a catalyst, and it converts 7D hydrocholesterol into D3. D3 is and then of course D3 gets converted into 25 hydroxy D3 and then 125 hydroxy D3, which is the active form of D3. So ये conversion जो है पहले skin में, फिर liver में, फिर kidneys में होता है, and then this is the active metabolite जो हमारे शरीर में हर जगह use होता है. मैंने आपको बताया कि intestines में use होता है, and the main role is to अपनी दोस्ती निभाने calcium के साथ. So this is the whole story about the sunlight. So sunlight is the catalyst that is required for the conversion of 7-dehydrocholesterol, which is a pigment found in our skin, and ये D3 में convert होता है. So the next question is about calcium and vitamin D along with each other. And इसके बारे में already मैंने बता दिया आपको, and I will just repeat it because this is slightly important. Vitamin D and calcium are both friends, and vitamin D अपनी मौजूदगी में it tells all the organs that calcium को आपको शरीर में रखना है. Calcium is important. ब्लड में कैल्शियम को हमें मेंटेन करना है. So जहाँ किडनी अपने यूरिन के थ्रू कैल्शियम को निकालती है, तो ये आके किडनी को बोलता है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, प्लीज कैल्शियम को वापस भेज दीजिए. एंड इंटेस्टाइन्स में जहाँ से कैल्शियम जो है हम स्टूल के माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं, वहां भी ये जाके बोलता है कि प्लीज कैल्शियम वापस दे दीजिए बॉडी में, बिकॉज आई एम प्रेजेंट हियर. एंड सिमिलरली जैसे मैंने आपको भी बताया अबाउट द ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट से भी दरख्वास्त करता है कि अभी हमारे जो ब्लड में कैल्शियम की थोड़ी कमी है, आप अपना जो स्टोर हाउस में आपके पास कैल्शियम पड़ा हुआ है, प्लीज आप इसको लाके हमें दे दीजिए. एंड देन ऑल्सो it also has an effect on the parathyroid gland, by means of which it maintains the serum calcium levels. So I hope that this is clear, that calcium and vitamin D go hand in hand. They go along with each other. But अगर आप supplements ले रहे हैं तो vitamin D and calcium के supplements इकट्ठे ना लें, 3 या 4 घंटे का गैप उसमें रखें. कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स अगर आप इसको रात को लेते हैं, यू माइट गेट थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आपको हो सकती है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट कैल्शियम यू शुड टेक इट इन द डे टाइम. एंड जब भी आप कैल्शियम लेंगे, आप अपने फाइबर की इंटेक भी अच्छी करेंगे उसको. इसके अलावा विटामिन डी जो है, ये आपको एक फैटी मील के साथ, आपकी जो लार्जेस्ट मील है उसके साथ में कंज्यूम करने की आपके पास में यू हैव द इंस्ट्रक्शंस. Osteomalacia will happen after how many years of vitamin D deficiency? So severe deficiency जहाँ होंगी वहाँ आपको osteomalacia होगा, and severe deficiency that is prolonged for almost 2 to 3 years, then it will end up causing osteomalacia. How does vitamin D deficiency impact? So शुरुआत में you will have mood changes, you will have some bone loss, you will have some muscle cramps, bone and joint pain, especially in the back, and fatigue. These are the symptoms that will come in the initial phase, and आगे चल के जो complications है we will discuss. So what are the health effects of vitamin D deficiency? अगर हम आगे इसमें बढ़ें, these are 2 questions and I club them together. Heart disease and high blood pressure can result
because of vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency is also associated with the development of diabetes mellitus, infection and immune system disorders. तो अगर आपको frequent infections हो रहे हैं and immune system disorders हैं, there is a probability that your vitamin D levels are also low. Vitamin D deficiency can also result in falls in older people. And again, जो जितने भी यहाँ पे डिजीजेस लिखी हुई हैं, एग्जैक्ट कारण नहीं है. दीज आर नॉट. सो इन सब चीजों के बहुत सारे. सो वेरी हेल्दी इंडिविजुअल हु इज एक्सरसाइजिंग ऑल द टाइम, हु हैज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हु इज फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल, हु इज फॉलोइंग अ गुड डाइट, उसको अगर डायबिटीज होती है तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसको अगर उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो जरूरी नहीं है उसको डायबिटीज होगी. सो ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड दीज विल, इसमें बहुत सारे हमारे पास में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से विटामिन डी डेफिशिएंसी एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है. बट अगर इसको हम, दिस कैन बी अ गुड वे टू प्रिवेंट इट. ये क्योंकि ये एक छोटा सा कारण है, ये एक ट्रीटेबल कारण है, इसको हम कम से कम हम सोच सकते हैं कि हम बाकी अगर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं. विटामिन डी एफिशिएंसी इज वेरी वेरी इजी टू क्योर. So this is one thing that you have to keep in mind, that this is not the sole reason that you might develop such problems, but this can be one of the treatable causes of developing these diseases. I hope this point is clear. What is the side effect of vitamin D? So I have a slide on this. I'll just discuss that. What is the max dose for elderly people if they have deficiency of vitamin D? So up to 60,000 units per week they can easily consume. And ye jo hai loading dose jo hai, this is the same. So you know, all the western literature, they are talking about 50,000 international units, but I believe in India we are using 60,000 international units. We already know that darkly pigmented individuals, जो जिनका शरीर का रंग जो है थोड़ा सा डार्कर होता है, इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. एंड 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक इज व्हाट वी आर फॉलोइंग. दिस इज व्हाट द एल्डरली पीपल कैन आल्सो फॉलो. आई हैड just one second. So there was a question about the toxicity or too much. What is the side effects of vitamin D, and I just wanted to. So initially, not in the case of toxicity, but in the case of too much vitamin D, you can have an appetite loss. आपको भूख लगना आपको कम हो सकती है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लग सकती है, सर में दर्द, fatigue and nausea. So these things can happen. And if you go to the toxicity, anorexia, weight loss, irregular heartbeat and hardening of the blood vessels and tissues due to increased blood. So जो विटामिन डी है, इतना कैल्शियम हमारे शरीर में लेके आ गया है कि वो अब जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है एंड ब्लड वेसल्स जो है हार्डन हो रही हैं. सो दिस इज द excuse me, this is the effect of too much vitamin D. So now a few more questions in the chat box. So for maintenance dose, 1 week is what is required. Once a week is what is required. अगर आप loading dose start करते हैं तो, and then when you move on, then you can give it in a duration जो gap है वो आप ज़्यादा दे सकते हैं.
which is more beneficial, vitamin D naturally or in the medicine form, UV rays needs to be. So whenever आप एक specialized medicine लेंगे तो वो obviously बहुत ज्यादा efficient होएगी as compared to the natural form. So efficiency अगर देखें तो हम उसकी ज्यादा है, but if you don't want to consume the medicine and अगर आपकी vitamin D की level sufficient है तो maintenance dose के लिए you can consume it via sunlight as well. What is the timing of sunlight good to take? 8 o'clock or 1 o'clock or 5 o'clock? So Western literature says 11 o'clock to 3 o'clock is the time that you should take it. And I'm very surprised to see that a lot of the leading uh, doctors in the country have also mentioned this, but I would just like to slightly differ here, because we are in a tropical country. We cannot follow the guidelines given by the Western countries regarding this. So me and Sir had a discussion, and Sir believed that 8 o'clock in the morning is the best time in India to take it, especially in the summer months, because दोपहर के टाइम 11 o'clock to 3 o'clock, that is the जो एकदम पीक होता है सन का. So that is what is required in the Western countries, जहाँ पे the latitude is not the same. So this has been documented everywhere कि जो latitude है, that also determines the amount of vitamin D that you can get. And because we are a tropical country, I believe that 8 o'clock in the morning is a good time to consume um, the sunlight. And so there is a myth that हमें सुबह सुबह एकदम प्रातः काल में हमें सूर्य नमस्कार जो है वो करना चाहिए. एकदम सुबह सुबह करने से विटामिन डी की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी. ज्योतिका रैना जी कह रहे हैं डॉक्टर विटामिन D3 कब लेनी चाहिए? जब डेफिशिएंसी हो जाए तब, या फिर आफ्टर 40 लेना ही चाहिए? नहीं, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए. Calcirol or Shelcal, which is good or both? Calcirol is a form of calcitriol is a form of vitamin D, and Shelcal is also good. Shelcal is for calcium. Some calcium tab linked to kidney stone. How? तो of course अगर calcium आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो जगह जगह डिपॉजिट होगा एंड वो स्टोन फॉर्मेशन भी काम कर सकते हैं. अभी calcium की बातें नहीं कर रहे हैं हम. रश्मि कर्नावत जी कह रहे हैं डॉक्टर्स देयर आर ऑलवेज क्रैकलिंग साउंड इन माय लेग्स व्हाइल गेटिंग अप सो मेनी टाइम्स, व्हाई इज इट सो? So this is due to the knocking of your bones together, and ये आपका एक आदत सी पड़ गई है to your bones to do that, so it causes more wear and tear of your bones. So अगर आप ये voluntarily करते हैं तो इसको आपको avoid करना चाहिए. And other than that there is no real thing. अगर आपको कुछ हो सकता है, आपको कोई ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गए हो आपके नीज में, आपने लेग्स में लिखा है, लेग्स में पॉसिबल नहीं है, या तो नीज में होगा या कहीं ना कहीं कोई जॉइंट में होगा. सो यू हैव टू टेल अस वेयर एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, एंड आप अपना एक्सरे कराइए. हो सकता है कि कहीं आपकी हड्डी थोड़ी बड़ी हुई हो, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दिस, एंड दैट कैन बी ट्रीटेड. सो यू कैन जस्ट गेट एन एक्सरे डन, रश्मि जी, एंड लेट अस नो. Old age joint pain reasons is related to calcium deficiency. Yes, it can be related to calcium deficiency, and vitamin D and calcium deficiency goes hand in hand. What is the benefit of taking vitamin D if there is no calcium in the body? So आप ले सकते हैं. Of course, if your calcium is also less, you can take, and vitamin D is going to आपके शरीर में जो calcium है वो उसको better metabolize करने के लिए vitamin D is going to help. What are the symptoms of efficiency of vitamin D and calcium? We've discussed this. Please go back and see the video once. Ma'am, my vitamin D is 15 and B12 is 196. Should I take the medicine? So देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म पे यूजुअली मेडिसिन की बात नहीं करते, बट yes, your vitamin D levels are low. You need to start with the loading dose. जैसा मैंने आपको बताया है. आप आके, अमित जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू द OPD at 3 PM and speak to me. सुशील जी, आप भी ले सकते हैं. रजनी जी सिम्टम्स पूछ रहे हैं बार बार. ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर दिस वन स्लाइड एंड देन आई विल.
So these are the initial symptoms: mood changes, bone loss, muscle cramps आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं if you have vitamin D deficiency, and it can cause some bone and joint pain, and it can cause fatigue. So fatigue, mood changes, these are the most commonly seen and most commonly ignored symptoms, and this might be due to vitamin D deficiency. आप इसको देख सकते हैं. These are the symptoms of vitamin D deficiency. I usually like telling the deficiency and the toxicity by means of pictures, because मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि this आपको उससे ज्यादा आपको याद रहता है. So I'm going to just show you another picture. Then we'll end the show. So vitamin D deficiency say you can be putting on a bit of weight, excessive sweating होना, fatigue मैंने आपको बताया. So again, fatigue is very important. Mood swings, these are very commonly ignored symptoms. इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होना, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, जॉइंट पेन होना, इम्यून इम्पेयरमेंट मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होना, एंड आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना. दीज आर द symptoms of vitamin D deficiency. So now on that, I hope that that was clear, and on this note I would like to end the session now. Thank you everyone for bringing in all the questions and asking these questions today, so that everyone else can also benefit. A big thank you to Vamsi and Shivani ji for bringing in the questions from YouTube and Facebook. हर्ष शर्मा जी का एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहती हूँ कि विटामिन डी एंड विटामिन सी ओवर द काउंटर हेल्प. So over the counter आपको medicines आपको लेना नहीं चाहिए. You should consult your physician before starting any medicines. And this is the reason that I've taken this question is because this disclaimer is very required. I am telling you the doses, I am telling you the symptoms, I am telling you how to treat it, but you have to talk to your doctor before starting any of these medicines. So I hope that you can remember this. Thank you all for joining in. We'll be back tomorrow with another show, a new vitamin